Discuss about applications of equations of motion for a body moving under acceleration due to gravity. We will discuss application of that equations for a freely falling body towards gravity or for a body which is thrown vertically up against gravity. We will also discuss how to solve numericals for this situation. We will discuss 10 numericals, 5 numericals will be solved by me for your convenience, but 5 other numericals will be given to you for self-practice. To understand this topic properly, at first we should try to understand meaning of some important terms. This will help us in solving numericals to understand the application of equations of motion for numericals. And that important terms are first one gravitation, second one gravity, third one free fall, and we will also discuss one more term, that is acceleration due to gravity. So the first term is gravitation. This gravitation is also called gravitational force. Another term for gravitation is gravitational force. Now what is gravitational force? It is the force of attraction between any two bodies, any two objects in the universe. For example, this marker. If I release this marker falls towards the earth. That means the earth is attracting the marker. The earth is also attracting the moon is also attracting the earth. Earth is attracted by the sun is also attracted by the earth. The force of attraction between any two objects in the universe. You are also attracted by the earth. You are also attracted by the moon. And that force of attraction between any two objects in the universe is called gravitation or gravitational force. So if I ask you what is gravitation, the force of attraction between any two bodies in the universe is called gravitation or gravitational force. Another term is gravity. Whenever we use the term gravity, out of the two bodies, one should be the earth. The force of attraction between earth and any other object or body on it or near it. Both the bodies are attracted towards the center of the earth, and that force by which they are attracted is called gravity. So if I ask you what is gravity, the force of attraction between the earth and any other body on or near it is called what? Gravity. Another term, free fall. If I allow this marker to fall under the influence of only one force, that is force of gravity, this marker is said to be under free fall. If this marker falls under the influence of only one force, that force is force of gravity, then the marker is said to be under free fall. So a body is said to be freely falling body if it falls under the influence of only one force, that is force of gravity. So the three important terms, first one gravitation, second one gravity, third one free fall. And the last one, if I ask you what is the meaning of the term free fall, a body is said to be moving under free fall if it falls under the influence of only one force. उसके against में कोई और force नहीं होगा. No air friction is considered. Only one force. It falls under the influence of only one force, and that force is force of gravity. Then the body is said to be under free fall. And we will specially discuss the equations for freely falling body and a body thrown vertically up against gravity. Now the fourth term that we are going to discuss is the acceleration due to gravity, denoted by symbol small g. And first you note down the definition: the constant acceleration produced in a body due to the earth's force of gravity. Due to earth's force of gravity is called the acceleration due to gravity. So when a body falls freely, when the body falls under the influence of earth's gravitational force or earth's force of gravity, when it falls like this. Its initial velocity is 0. After 1 second it becomes 9.8 meter per second. After one more second it becomes
2 into 9.8 meter per second. After one more second it becomes 3 into 9.8 meter per second. It falls like this. It falls with increasing velocity. It is said to be under acceleration, and this acceleration is acceleration due to gravity. Since the body is moving with increasing velocity, it is under acceleration, and it falls with constant acceleration. If we do the calculation, in this part we'll get acceleration as 9.8 meter per second square. Here also we'll get 9.8 meter per second square. That means when a body falls under the influence of force of gravity of the earth, it falls with constant acceleration. जब बॉडी नीचे गिरेगी तो वो constant acceleration से ही गिरेगी और ऊपर जाते वक्त constant retardation. And the constant acceleration produced here is called acceleration due to gravity, denoted by symbol g. और इसका accepted value SI यूनिट में है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कन्वीनियंस इन न्यूमेरिकल्स उसके लिए लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ स्पेशल केस में न्यूमेरिकल्स में इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है. सो यू शुड नोट डाउन द डेफिनेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. So we discussed 4 important terms, and now we are going to discuss about equations of motion and modification in equations of motion for a body moves under acceleration due to gravity. So we are going to discuss equations of motion. First we are discussing equations of motion for a freely falling body. If a body falls under the influence of Earth's force of gravity, it always falls with a constant acceleration. It always falls with a constant acceleration. Suppose initially the velocity is 0. After 1 second it will become 9.8 meter per second. After one more second, 2 into 9.8 meter per second, like this. I already told you when a body falls freely, it falls with constant acceleration. और एक body अगर constant acceleration में है, then its velocity will keep on increasing. So body अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका speed velocity क्या होगा? It will keep on increasing. So under this situation, how to apply that equations of motion? यहाँ हम लोग थोड़ा modification करेंगे पहले इक्वेशन में, फिर एप्लीकेशन के बात करेंगे हम लोग. फर्स्ट इक्वेशन वाज दैट वी डिस्कस v इक्वल्स टू u प्लस at, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस gt. जब भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी या फिर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, इनका न्यूमेरिकल्स किया जाता है तो इक्वेशन में ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए. सो v इक्वल्स टू u प्लस gt हो गया, एंड सेकेंड h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम लोग ज्यादा कन्वीनियंट टर्म है हाइट. सो h रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द बॉडी, एंड c v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh. as के जगह पे क्या होगा? gh. तो इन तीनों इक्वेशन को आप लोगों को लिखना है और इनका सिंबल क्या मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं. यू हैव टू नोट इट डाउन. u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, t is the time taken. T is the time taken. G, small g, represents acceleration due to gravity. Then H represents
height. So the three equations of motion for freely falling body, B equals to U plus gt, then H equals to ut plus half gt square, then third one V square minus U square equals to 2gh. Now we will discuss the equations of motion for a body thrown vertically up. एक बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी जब हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो सिचुएशन कैसा क्रिएट होगा? If this is the earth and body is thrown vertically up, body ऊपर जा रही है, the body is thrown vertically up. So here suppose its velocity is 39.2 meter per second. After 1 second its velocity will become 29.4 meter per second. After one more second its velocity will become 19.6 meter per second, and after one more second the body will stop. That means its velocity will become 0. So when a body moves vertically up, it moves under retardation, and if you calculate retardation between any two positions, you will get the value 9.8 meter per second square every time. That means if a body is thrown vertically up, then also it moves under constant retardation, okay, or we can say negative of acceleration. So in this case, the equations of motion can be written as V equals to U minus GT. Second one is H equals to UT minus half GT square, and the third equation that we know, V square minus U square equals to 2GH. So V square minus U square equals to 2GH. Here for G we have to use negative sign, so we can write minus 2GH. If we simplify it, we'll get V square equals to U square minus 2GH we can write. But while solving numericals it will be a bit inconvenient, so my suggestion, you try to solve numericals with the same equation. For the last case, V equals to U plus GT, second one H equals to UT plus half GT square, and the third one V square minus U square equals to 2GH. न्यूमेरिकल करते वक्त यू कैन यूज दिस इक्वेशन, बट आपको एक ध्यान रखना होगा, जो वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसको आपको नेगेटिव में लेना होगा. अगर 9.8 तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर 10 है तो जी का वैल्यू लेना होगा 10, इट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अगर आप जी का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो इक्वेशन मॉडिफाई अपने आप हो जाएगा. सो माय सजेशन, चाहे फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो, चाहे बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप हो, you can solve the numericals using these three equations. First one, V equals to U plus GT. Second one, H equals to UT plus half GT square. Third one, V square minus U square equals to 2GH. What is G here? G is acceleration due to gravity. H क्या है? H is the height. और एक और important बात, when a body is thrown vertically up at maximum height, V is 0. And when a body is allowed to fall freely, its initial velocity is always taken as 0. Okay, so ऊपर से नीचे जब बॉडी गिरेगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है. बॉडी को अगर ऊपर थ्रो करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट 0 लेना है. जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो एक्सेलरेशन होगा. जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है against gravity तो retardation होगा. So now we are going to discuss numericals. Now we'll discuss first numerical. Question number 1. A body is allowed to fall freely from a height of 180 meter. Calculate number 1, the time taken by the body to reach the ground. Number 2, the velocity of the body when it strikes the ground. And value of G for solving the numerical is given here.
g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू अगर गिवन है तो आप लोगों को वही वैल्यू यूज करना होगा, अगर गिवन नहीं है यू कैन यूज 9.8 और यू कैन यूज 10 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो हियर इफ यू लुक एट द सॉल्यूशन, सिचुएशन क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ, टोटल हाइट गिवन है कितना 180 मीटर। और आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना होगा कि जब एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, व्हेन इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, थ्रो किया जाता है, वो सिचुएशन नहीं है यहाँ। द बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, फ्री फॉल में है। इन दैट केस u इज टेकन एज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेना है हम लोग को, और बॉडी फ्री फॉल में है, एक्सेलरेशन में है, तो g का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम लोग, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो u0 g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाइट गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, बॉडी को ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट वी विल हैव टू फाइंड आउट। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग देखें, यू जी एच टी वाला इक्वेशन है, we know the equation h equals to ut plus half gt square। h का वैल्यू यहां गिवन है, इट इज 180 मीटर, u 0 है, टाइम गिवन नहीं है, प्लस हाफ इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, एंड t स्क्वायर। So 180 meter is equals to 10 meter per second square by 2 into t square. So it is 360 meter. If you multiply this 180 by 2, 360 meter is equals to 10 meter per second square into t square. So t square is equals to 360 meter divided by 10 meter per second square. So you will get t square as 360 divided by 10, t square हम लोग को मिलेगा 36 second square, therefore t is equals to 6 seconds. So we got the answer of first part. First part में हम लोग को पूछा गया time taken by the body to reach the ground. The time taken by the body to reach the ground is 6 seconds. Now in the second part, the velocity of the body when it strikes the ground. जब ये body ground को strike करेगी तो strike करना नहीं है, just before touching the ground. So velocity क्या होगा? क्वेश्चन में बोला गया द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, एक्चुअली इट इज जस्ट गोइंग टू स्ट्राइक द ग्राउंड। सो इन दैट केस सेकेंड पार्ट में यहां कर रहा हूं, थोड़ा फोकस कीजिएगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग को चाहिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एंड उसके लिए हम लोग के पास इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। आप जब प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस होगा, देन आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा सिचुएशन में क्या इक्वेशन यूज करना है। यहाँ पे u, g और t का वैल्यू मुझे पता था। आई वॉज आस्क्ड टू फाइंड v, तो v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। u इज 0, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हम लोग को अभी पता चल गया, दैट इज 6 सेकेंड। सो इट इज, आप जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड और इस सेकेंड स्क्वायर का एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। सो 60 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेयर t we have calculated as 6 second, final velocity 60 meter per. Now you can note down question number 2 for your self practice. The question is, a stone is dropped from the top of a building. It takes 3.84 seconds to reach the ground.
कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ g का वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है। सो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। द स्टोन इज अलाउड टू ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो जब भी बॉडी ड्रॉप किया जाएगा फ्री फॉल में होगा, इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। तो u 0 लेना आपको और हाइट कैलकुलेट करना। यहाँ पे g का वैल्यू गिवन है, दैट इज 72, g का वैल्यू इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू गिवन है आपको। सो u g गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है h, साथ में दिया हुआ टाइम 3.84 सेकेंड्स। सो आपको खुद को डिसाइड करना है कौन सा इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए बेस्ट टू गेट द हाइट। सो ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 and its solution. This is another simple question, but here the body is thrown vertically up. So the situation is different. Last two numerical, the body was falling freely, and here the body is thrown vertically up. So here it is given a body is thrown vertically up with a speed of, so initial velocity is given 20 meter per second. Calculate number 1, the time taken by the body to reach the maximum height. The time taken by the body to reach the maximum height. And we should know that at maximum height, final velocity is 0. And number 2, the maximum height attained by the body. And for solving both this part, value of g is given and value of g should be taken in negative because there is retardation. So look at the solution here. So initial velocity, the speed or the velocity with which the body is thrown, u का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। g नेगेटिव में लेना होगा एंड v इज 0 क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी becomes 0, body comes to at rest. So first part में we have to calculate time and we know the formula or the equation relating these four. v equals to u plus gt में ये चारों क्वांटिटीज हैं, हम लोग को t फाइंड आउट करना है। v गिवन है, u गिवन है, g गिवन है। v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड और g हम लोग नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई करने से ये -20 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। सो टी इज इक्वल्स टू -20 meter per second by 10 meter per second. Therefore t is equals to 2 seconds. So we have calculated the time taken by the body to reach the maximum height, and second part में आपको calculate करना है the maximum height attained by the body. Now height calculation के लिए अगर आपको u, g और t पता है, जो कि हम लोग को ऑलरेडी पता है, u, g और t we have already calculated, so we can write down the equation h equals to ut plus half gt square. So h equals to u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड टाइम 2 सेकेंड प्लस हाफ इंटू g का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 2 सेकेंड, सो इट इज 2 सेकेंड होल स्क्वायर। थोड़ा स्पेस कम है, आप लोग ठीक से नोट डाउन करिएगा। 2 सेकेंड होल स्क्वायर, सो इट विल बी
h इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 2, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 40 मीटर, और ये माइनस साइन विथ प्लस विल बी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मीटर. So h is equals to 40 meter, and here it is 40 meter minus 20 meter, 5 4 are 20, therefore height is equals to 20 meter. So what is the height attained by the body? The height attained by the body h equals to 20 meter. So ये न्यूमेरिकल करते वक्त भी मैंने इक्वेशन में नेगेटिव साइन नहीं लिया, मैंने g का वैल्यू नेगेटिव में लिया. सो दिस इज कन्वीनियंट टू सॉल्व. आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, और इफ यू वांट यू कैन यूज इक्वेशन इन नेगेटिव, तब आपको g का वैल्यू पॉजिटिव लेना होगा. ओके, सो नोट डाउन द सॉल्यूशन. सिंपल क्वेश्चन. Now question number 4 for your self practice. You have to note down this question. Question number 4. A body is thrown vertically upwards with a speed of 14 meter per second. Calculate number 1 the height to which it rises, and number 2 the time taken by the body to reach the highest point. Value of g 10 meter per second square for solving this numerical, and these are the answers. I am not going to give any hint for this particular question. This one is similar to question number 3, so you have to try yourself for solving this particular question. Now I am going to solve question number 5 for you. The question is, a stone is dropped from the edge of a roof. Calculate how long does it take to fall 4.9 meter, and second, how fast does it move at the end of that fall. इस बार बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एंड वी डोंट हैव टू डू कैलकुलेशन फॉर एंटायर हाइट. द बॉडी, द स्टोन falls by a distance of 4.9 meter. When a body falls freely, हम लोग को पता है हम लोग को क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, g का वैल्यू गिवन है उसको पॉजिटिव में लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट टाइम. फर्स्ट पार्ट में यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट टाइम. तो u, g, h और t का रिलेशन से ये हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे. वी नो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. h equals to ut plus half gt square, and here h is equals to 4.9 meter equals to u0 0 into t plus half into g का वैल्यू है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into t square. So 4.9 meter is equals to, if you cancel here you will get 4.9. So 4.9 meter, and here 4.9 meter per second square into t square. So t square is equals to 4.9 meter by 4.9 meter per second square. T square equals to, you will get 1 second square. Therefore t is equals to 1 second. So the time required by the stone to fall by 4.9 meter is 1 second. Second part, how fast does it move at the end of that fall. मतलब ये fall का ये जो end point है यहाँ पे कितना ये fast होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग को final velocity calculate करना है. So second part, this was the first part. सेकेंड पार्ट में हम लोग को फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना. वी कैन यूज द फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस जी टी. सो v इज इक्वल्स टू u पता है हम लोग को, u इज 0, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t इज 1 सेकेंड. सो यू विल गेट
V, if you simplify, you will get 9.8 meter per second. So how fast does it move at the end of that fall? How fast the body moves with a speed of 9.8 meter per second. Okay, now I am going to give you question number 6, and that question is for your self-practice. The question you can note down: a ball is gently dropped from a height of 20 meter. Calculate, number 1, the velocity with which it strikes the ground. Number 2, the time after which it strikes the ground. Okay, so the answers are given for your convenience, and for calculation of the velocity and the time, you should consider g equals to 10 meter per second square, acceleration due to gravity 10 meter per second square. Now I am going to discuss question number 7, and the question is: a body falls from a tower and touches the ground in 0.5 second. Calculate the speed with which it strikes the ground if g equals to 10 meter per second square. Simple question. Look at the solution. You can easily understand this one. A body falls and strikes the ground in what time? 0.5 seconds. इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता है एक बॉडी जब फ्री फॉल में होता है u इज कंसिडर्ड टू बी 0. g का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. You are having u, you are having g, you are having t and their values, और तुमको कैलकुलेट करना है v, velocity just before striking the ground. So values are given there. We can directly solve it. We know the equation. u, v, g, t का रिलेशन वाला इक्वेशन कौन सा है? v equals to u plus gt. So v equals to u 0, g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into time 0.5 second. So v is equals to, if you multiply, you will get 5, and the unit will be meter per second. So यहाँ final velocity which we are getting is 5 meter per second. So simple question. Note down the solution. Now another question for your self-practice, question number 8. A stone is thrown vertically upwards or up with a speed of 5 meter per second against gravity. Calculate the height attained by the stone. और कैलकुलेशन g का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है वो आप लोगों को डिसाइड करना है, एंड देन यू विल हैव टू यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, और आंसर आपका आना चाहिए 1.25 मीटर. सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन. Another question that I am going to solve for you, question number 9. A body thrown up vertically reaches the maximum height in 3 seconds. Calculate the velocity with which it was thrown up. Calculate the maximum height it reaches. And for calculation, we will consider value of g as 9.8 meter per second square. So look at the solution here. The body thrown up vertically and reaches the maximum height in 3 seconds. In maximum height, final velocity is 0. And in the first question, you have to calculate the velocity with which it was thrown up. That means you have to calculate the value of u. And value of g is taken in negative, minus 9.8 meter per second square. So for solution of first question, you have to find out u. You are having v, g and t. Simple solution. If you know the equation, v equals to u plus gt. If you know this equation, v equals to u plus gt, v is 0, you will have to find plus minus 10 meter per second square, okay, minus 9.8 meter per second square as given in the question, and time is 3 seconds. Time is 3 seconds.
So here we can write minus u is equals to minus 9.8. If you multiply by 3, you will get 29.4, and the unit will be meter per second, because the second square and this second, out of that second square, 1 second will be cancelled with this second, so the unit will be meter per second. So minus u is equals to minus 29.4 meter per second. Therefore, initial velocity, or the velocity with which it was thrown, is 29.4 meter per second. So this is the solution of first part. Now in the second part, what is asked? The maximum height it reaches, h you will have to calculate. We can write, we know the equation, h equals to ut plus half gt square. कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो आप लोगों को डिसाइड करना होगा. इफ यू डू द प्रैक्टिस यू कैन इजीली नो which equation at which situation you are going to use. So h equals to ut plus half gt square. U का value we know that it is now 29.4 and time is 3 seconds, and here half into g का value हम लोग को लेना है minus 9.8 and time is 3, so 3 square. 29.4 into 3, if you multiply, you will get 88.2 plus, here minus sign we can write, plus into minus, minus, if you divide, cancel it, you will get 4.9. So here 4.9 into 9, 4.9 into 9, so we'll get 88.2 minus 44.1, and the answer is 44.1 meter. Do this calculation properly. I have not used the units here because of the space here, so you should note down and solve this properly with units. Now you will have to solve question number 10, and this is the last question of this video, and you can note down the question. A mango is hanging on a tree at a height of 20 meters from the ground. A boy throws a stone vertically upwards and strikes the mango. Calculate the time taken by the mango to touch the ground after being stricken. मतलब stone मैंगो को लगने के बाद स्टोन नीचे गिरने का टाइमिंग क्या है, दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट, एंड द आंसर इज 2 seconds. फॉर कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ g इज टेकन एज 10 meter per second square for this particular numerical. So we have discussed 10 different questions. 5 I have solved for you and 5 you will have to solve, and I have discussed simple questions today, and then in the next video, in some other video, I will discuss complicated questions related to free fall and a body thrown vertically up against gravity. Thank you.